हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो कैसा रहा आप सबका आज का दिन? हमको पता ही है, जस्ट इन द लास्ट वीडियो मेगाट्रॉनिक्स के लिए मैंने मेगाट्रॉनिक्स का नया स्टीरियो लेकर आया था कश्मीरी गेट से अपने क्रैकर्स को चेंज करवा के। सो फटाफट से आज इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। एंड रिमोट का मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। लुक तो इसकी खैर उससे ज़्यादा अच्छी लग रही है, बट थोड़ा सा शेप में मुझे जो अपना सेटअप है, जो बिल्ड है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। ये गाइस इसका रिमोट एंड ये सब यहाँ पे फिट हो गया बहुत बड़ी तरीके से। सो अब गाइस सबसे अच्छी बात गाइस स्टीरियो की ये है कि बंद होगा ना तब भी ये टाइम शो करता है, विच इज़ वेरी गुड राइट। सो ये गाइस इसका रिमोट है एंड जरा इसको ऑन करके देखते हैं। एंड ये बहुत बढ़िया तरीके से ऑन हो जाता है। एंड अगर ये ब्लूटूथ पे अगर आप लोगों ने लास्ट छोड़ा होगा तो ये वहीं से सॉन्ग भी कनेक्ट करके सॉन्ग प्ले कर देगा, विच इज़ वेरी गुड राइट। सो बैकग्राउंड में आप लोग एक सॉन्ग सुन ही रहे हो, उसकी वॉल्यूम मुझे काफ़ी कम करनी पड़ी थी, बट आपको सुनाना था इसलिए वो सब मैंने किया। सो अब इन एनी केस ज़रा इस रिमोट के फंक्शंस एंड स्टेरियो के फंक्शंस देख लेते हैं। बेसिकली गाइस ये सिर्फ 900 रुपये का एक बेसिक चाइनीज स्टेरियो है। यूजुअली सारे स्टेरियोज एक जैसे ही होते हैं एंड ये भी कोई डिफरेंट नहीं है। एंड इसके अंदर सिंपल हमें जो भी इक्वलाइजर के फंक्शंस, बेस, ट्रेबल वाली चीज़ें सारा कुछ मिल ही जाता है। सो चलो, इट इज़ टाइम फॉर द साउंड टेस्ट, लेट्स बिगिन। Tell me where to go, tell me where you like it. All the fame knows, but you know that you like it. I'ma get low, down in my feelings. You gon' get low, drop it down from the ceiling. I don't really know what the hell I'm feeling. All that I know is my heart, she's stealing. Where we gonna go? So guys, that's enough testing with just the stereo. It is time to connect this bad boy. So guys, I've connected all the wires of every little thing here. The supplies, the amplifier, which is this, the Sony subwoofer, the Voltex 6x9s, and our MeGATRONIX actually, MeGATRONIX stereo. Each and other is, everything is connected. So it is time to turn the supplies on. Okay, the supplies are on, the amplifier green light is here, and our stereo is also on. Now it is playing. So currently the volume is I think it's under 20s. Yep. That's on the zero gain, you guys. Take a dip into the ocean. Just come with me and we can fix our heart that's broken. I know you love it when we driving down the coast, yeah. I'll take you anywhere, just tell me where to go, yeah. Got nothing else but time, so let's put on a show, yeah. Your story crosses mine, so let's go at it,
गाल चाचा जी ने कड्डनी सिखाई पहली गाल चाचा जी ने hey looking over there I'm the kind of girl that only poppin' over there and when we in the club take it down low and when we in the bed सालों हर सांस में बस तेरे प्यार को जब से मिला मुझे Boy I'm falling I've been feeling hella blind and I'm sad, right? But I'll never look back. I keep dreaming even when I have a bad night. I'll figure out my own path. I don't wanna pain ya, 'cause I'm in the glory. I don't understand life, why it's so boring. Guys, don't ever buy that cracker one. This MeGATRONIX one is way superior to that Krackers one. Especially इसका remote and इसकी speed मतलब Krackers से तो कहीं गुना better है. मतलब responsiveness is so high and the clarity अगर आप लोगों ने सुनी है तो please Krackers मत लेना, buy the MeGATRONIX. So there you have it guys. Sound test has been completed and मैंने सोचा था कि 3-4 गाने चलाऊंगा, मतलब 3-4 गाने डायरेक्ट स्टेरियो से एंड 3-4 गाने विद एम्पलीफायर, बट मैंने एक्चुअली 15-16 गाने प्ले कर डाले एंड I was actually thoroughly enjoying the experience. मुझे क्रैकर से तो much better लगा. Even the looks are a little bit better as well. कि उसमें बस रेड कलर था, मुझे रेड कलर का ही मन था इस बारी, बट ब्लू भी बहुत अच्छा लग रहा है एक्चुअली. इसका एक्चुअली लुक थोड़ा क्लासी है, वो थोड़ा झटका टाइप था, थोड़ा सा उसका डिस्प्ले बड़ा भी था एंड जहाँ मुझे इसे यूज़ करना है वहाँ पे आप लोगों ने देखा ही है इसकी खाली फ्रंट का जो फेस है वो थोड़ा सा ही बाहर दिखने वाला है. सो जितना कम दिखेगा उतना बेटर है एंड रिमोट अच्छा चलना चाहिए, बस मेन बात वही है. सो गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको साउंड टेस्ट कैसा लगा मेगाट्रॉनिक्स का कंपेयर टू द क्रैकर्स वन, जो कि अभी हमने आई थिंक 1-2 वीडियो पहले ही किया था. तो फिर गाइस हम मिलेंगे बहुत जल्द किसी औसम से वीडियो में, जो कि आप सबको पता ही है क्या होने वाला है. सो हम उसी के अंदर हम मिलेंगे और उसी के अंदर हम बातचीत करेंगे. सो गाइस अगर हम नए हो मेरे चैनल पे, आज आप लोगों ने ये वीडियो को पहली बार देखा है, तो गाइस बिल्ड टेस्ट बहुत कुछ है, कार ऑडियो, होम ऑडियो, कार्स एंड दुनिया जान की चीज़ें और हैं. सो एक बारी आप चैनल में जाके वीडियोस का एंड प्लेलिस्ट का सेक्शन जरूर ओपन करके देख लेना. अगर कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी इंटरेस्टिंग लगता है, तभी सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना. कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पसंद आएगी आप तभी सब्सक्राइब भी करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल का चेकआउट भी करोगे. ठीक है गाइस, फिर हम मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में. बाय, टेक केयर, सी या गाइस, हैव लॉट्स ऑफ फन.